सो नमस्कार ऑल ऑफ यू। तो आमर ओडिशा जुडिशियल सर्विस सबुठु इम्पोर्टेंट जिनस है मेन्स एग्जाम रे जदि आपण प्रॉपर आंसर टा लिखुचंती आंसर राइटिंग खाली आंसर राइटिंग आपणकर नॉलेज बेस ऊपर डिपेंड करेनी प्रेजेंटेशन आपण केमती करचंती ता ऊपर भी बहुत डिपेंड करे। तेणु आज जो कोर्स विषय में आपको कहूँ ऑलरेडी एटा क्वाइट पॉपुलर कोर्स स्पेशली जो माने नुआ प्रिपरेशन और सेल्फ प्रिपरेशन करने पे चाहते जो माने इंस्टीट्यूशनल प्रिपेयर करछंती तो मोस्टली से इंस्टीट्यूशंस माने ताको ए जिंसटा प्रोवाइड कर दियंती एटलीस्ट आरोहन रे तमे एटा प्रोवाइड कर दो पिला को कि प्रीवियस ईयर जति कि आपनकर 2012 रु आज पर्यंत जति कि मेंस रो आंसर्स लिखिबार अछि केमिति लिखिबार अछि दैट वी प्रोवाइड। तो आ बहुत पिला भी एटा कहि चंदी ताको पाइला पर इंटरव्यूज करिकारे कि एई जिंसटा ही सफिशिएंट थिला तांको एग्जाम क्लियर करिया पे। ओके तो ता विषय रे मु किछु कहबी कोर्स रे कोन अछि आपनकर। सो मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो थरे कि आपनकर 2012 रु आपनकर सब क्वेश्चंस कवर्ड हिची आज पर्यंत 2012 मेंस रू till date all optionals okay have been covered सब optionals एतरे आपनकर कवर हिची। ओके तापरे न्यू पैटर्न हिसाब रे एटा हिची न्यू पैटर्न माने कोन मु देखेबी आपनको केमती कोन तारो आंसर सरिका अछि। तो आमे बुक्स करिके जदी देखिबा किछि बुक्स भी हम अवेलेबल अछि तांकर जो स्टाइल ऑफ राइटिंग द आंसर ताकू जदी अपन लिखुचंती स्पेशली जो माने परीक्षा खाता देखी ओके जोटा कि एवरी ईयर मते से अपॉर्चुनिटी टा मिले जो पिला माने खाता मगांती से माने तापरे तांको भीतर जो माने आसी डिस्कस करंती मोर काहे मार्क कमी होला गोटे बड़ रीजन हला आपण जदी ताकू पैराग्राफ फॉर्म्स रे गोटे स्टोरी भलिया लिखि दिबे ओके तार इवैल्यूएटर में भी सी एते ताको एप्रिशिएट करिवेनी किंतु आपण जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स फुटी की बाहर थिबो जहा जहा पचारची क्वेश्चन रे अंडरलाइन हेथिबो डायग्राम थिबो केस लॉ टा क्लियरली देखा जाउथिबो केस लॉ देइचंती जदी रिक्वायरमेंट अछि क्वेश्चन रो इलस्ट्रेशन देइथिबे वैल्यू एडिशन पई आपण लीगल मैक्सिम गोटे देइथिबे। ओके तो एई सब जिंस जदी आपण करूचंती ताले आपण ठीक टाइम भीतर आपण आंसर भी सारी परिबे आ प्रॉपर मार्क्स भी पाई परिबे। तो आरो मेजर जदी मु कहिबी कोन कोन एडवांटेजेस अछि तो फर्स्ट हला आंसर जोड़ा रोचे न्यू पैटर्न हिसाब रे रोचे व्हाट इज दिस न्यू पैटर्न मु एबे गोटे कॉपी आपन को आंसर रे देखिबे त आपण जान परिबे। ओके आ जो स्टूडेंट्स माने भी हमर पढी की सेमती आंसर्स लिखि चंती तांकर भी टेलीग्राम रे जो माने रैंक्स पाई चंती टेलीग्राम रे हमें ओपनली तांकर टेस्ट सीरीज रो खाता गुडा देइचु आपण भी देखि परिबे सेथरे हम टेलीग्राम चैनल रे से खाता गुडा अवेलेबल अछि। तो सेही टाइप रो केमती लिखिबार अछि आपण को आंसर ता एथरे डायग्राम हिंट्स भी अछि इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रे जोड़ा कि 15 मार्क ऊपर जो क्वेश्चन है डायग्राम्स केमती करिवे अवश्य आमे सब क्वेश्चंस पे दे देछु सो दैट आपन प्रैक्टिस रहइबो। लीगल मैक्सिम्स एटा कोनोसी बुक रे प्राय मिलेनी बुक रे खाली इंपोर्टेंट आपनकर पार्ट्स रो इंपोर्टेंट सेक्शंस रो रिलेटेड लीगल मैक्सिम्स थिबो किंतु आम मॉडल आंसर से कोन ना ईच एंड एवरी क्वेश्चन पे लीगल मैक्सिम्स कोन कोन टोटली रेलेवेंट अछि सेटा दिया हिच। ओके आउ लैंडमार्क केसेस एटा आपन बुक्स से भी पाई जिवे आउ रिसेंट केसेस जोड़ा कि जनरली बुक्स से मिलेनी तापे आपण को किछि यू नो रेलेवेंट करंट अफेयर्स लीगल करंट अफेयर्स सोर्स आपण को पढिया पे पड़िबो। तो ये सब एथरे इंक्लूडेड हुए। कोर्स डिटेल्स यदि कहबा आपण यदि मार्केट रे एंटरकाइना आपणकर टोटली 5टा पेपर आपण को दबार अछि सो एटलीस्ट 2 to 3 बुक्स रे एटा कवर होए। ओके तो जदि भी आपण सेमती बुक्स हिसाब रे किनचंती आई डोंट थिंक इट विल बी लेस देन 2000 रुपीस टोटल सब पेपर्स पे किंतु आमर ये जो जब कि सब स्टूडेंट्स एटा एक्सेस करि परिबे तो एटा कोर्स फी आरो 500 रुपीस रखा हिची फॉर 1 ईयर। ओके आउ एटा आपण ऐप रे ही परचेस कर परिबे सेल्फ परचेस मोड रे एटा ऐप रे आपण को परचेस करिवार अछि आउ वैलिडिटी आरो रहइबो 12 मंथ्स पर्यंत 1 ईयर वैलिडिटी आपण को रहउछि। ओके 12 मंथ्स रो वैलिडिटी रहउछि। सो दिस इज यू नो वेरी वेरी इंपोर्टेंट टूल जोटा कि आपण को बहुत ही हेल्प करिवो आपणकर जर्नी रे ओडिशा जुडिशियल सर्विस पे एटा ऐप रे आपण निजे डाउनलोड करिकि ताको करि परिबे एनरोल करि परिबे निजे परचेस करि परिबे नहले जदि किछि इश्यूज अछि आपण लिंक दरकार ऐप रो एंड ऑल
ताले ए नंबर रे आपण कॉल कर दे परिबे 7684054656 किंबा ए नंबर रे आपण व्हाट्सएप भी कर दे परिबे ओके सो आई विश यू ऑल द बेस्ट मु कहउतली के को टाइप रो हमर एग्जाम रो ये रहउची तो दैट आई विल जस्ट शो यू एटा हला ता पैटर्न ता देखंतु हमर आंसर्स करिका केमती रहउची तो 8 मार्क्स रो क्वेश्चन हला इंट्रोडक्शन देला तार थ्योरी और एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉइंट्स ओके एथरे मेन जिंस हला आपनकर जो हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स से गुडा आपनको माइंड रे रखिबार अछि लैंडमार्क केस लॉस जा दबार थिला ता विषय दी लाइन लिखला कनेडा 8 मार्क क्वेश्चन लीगल मैक्सिम्स ओके एटा बेसिकली यू नो सबू रे त हम लिख परियन किंतु जे मने रख परिबो ता पई बहुत बड़ वैल्यू एडिशन एटा ओके तापरे तार रेलेवेंट इलस्ट्रेशन और कंक्लूजन एटा 8 मार्क्स पे देछि ऑब्वियसली मु 8 मार्क्स पे आपन को एते बड़ आंसर 8 मार्क्स पे लिखियोबनी दैट इज ट्रू बट आमे एया ट्रीट करछु कि आपन एई पर्टिकुलर क्वेश्चन द एंटायर कांसेप्ट जेंति बुझी पारि जदी एई क्वेश्चन ता बे 15 मार्क की 25 मार्क पे पड़ला एई आंसर ता भी सफिशिएंट हबो ओके सो 5 मार्क्स की 8 मार्क्स क्वेश्चन रे आपन को डायग्राम दबार नाही बट वी हैव अज्यूम्ड एटा गोटे आपन को पूरा एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स गोटे आपन कहि दे परिबे जो तरी की सबु पार्ट्स तारा जो जा जा क्वेश्चंस पडुची इवन जोडा की आपन को प्रॉब्लम क्वेश्चन जिंदे एई क्वेश्चन स्टार होची ओके फिराक फॉर्मेट रे FIRAC ओके तो सेही फॉर्मेट रे आपन को दिया हेची ओके सो यू कैन गो थ्रू इट तारो आठू नहीं कि अपन निजो नोट्स भी बनेबे एमती नहीं कि अपन को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिया ही जेची माने अपन एटा को ही भाबी देबे एटा अपन को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ गुटे मन रखबे निजरो नोट्स भी एथरे बनेबार अछि ओके फ्रॉम हियर यू कैन मेक योर ओन नोट्स राइट सो बेस्ट विशेस फॉर योर प्रिपरेशन स्टे स्ट्रांग स्टे डेडिकेटेड जदी भी टेम्पोररी सेटबैक्स किछि रहूची आपण सेथरे भांगी पडंतुनी ओके प्रॉपर प्रिपरेशन जहाँ रिक्वायर्ड जेमती आंसर टा लिखिबा ता ऊपर फोकस करंतु निश्चित भाबरे सक्सेस आपन को मिलिबो नमस्कार सो नमस्कार ऑल ऑफ यू इज माय वॉइस क्लियर सुगा जाउछ आपन क्लियरली yes are you able to hear me तो yesterday मु गोटे ओवरऑल आपन को कॉन्सेप्ट्स देथिली कि हमें कौन कौन ए पर्टिकुलर बैच रे करिबो फाउंडेशन बैच रे ओके सो हमें एविडेंस लॉ दैट वी विल बी डिस्कसिंग ओके डिटेल्स रे डिस्कशन तको करिबा नोट्स मो आपन डिक्टेट करिबी यू कैन राइट इट बट दैट नोट्स जदि आपन अलगा कोट की किछि मिस करी गले कि आपन तको आउथरे यू वांट टू गो थ्रू इट सेटा आपन को ऐप रे ऑलरेडी अपलोडेड हे जाइछ ओके तो क्लास आगुर मु तको अपलोड कर दोथि तो आपन डायरेक्टली सेउटू भी इट डिपेंड्स ऑन यू आपन यदि सेउटू देखि कि रेफर करिवे किछि प्रॉब्लम नै बट आई वुड सजेस्ट कि आपन लिखिबे ओके नोटटा लिखिले आपन को सुविधा ओके सो वी विल स्टार्ट विथ द लॉ ऑफ एविडेंस राइट अच्छा लॉ ऑफ एविडेंस रे बेसिकली हम गोटे जनरल जिनस देखिबा ओके आज क्लास रे वी विल नॉट बी वेरी स्पेसिफिक टू इंडियन एविडेंस एक्ट और भारतीय साक्ष्य अधिनियम दिस इज बेसिकली लॉ ऑफ एविडेंस ठीक अछि एविडेंस कोन लॉ ऑफ एविडेंस कोन ओके तेणु तार कैरेक्टरिस्टिक्स कोन एई सब जिनस ऊपर हम टिके डिस्कस करिबा ता ऊपर जहाँ भी अपन डाउट्स अछि अपन ताको पचारि परिबे ओके सो generally speaking what do you mean by evidence माने आपण कोन बुझुछन ओके
व्हाट डू यू मीन बाय एविडेंस तो गोटे जिंस तो है कि हाँ किए स्कॉलर माने कौन कहते ओके डिफरेंट डेफिनेशंस अपन दे परिबे कि ब्लैकस्टोन या कहिथिले बेंथाम या कहिथिले ओके सो दोस थिंग्स यू कैन से मते सेगुडा दरकार नहीं किंबा स्टैट्यूटरी डेफिनेशन दे परिबे ओके कि इंडियन एविडेंस एक्ट रे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम रे एविडेंस को यही हिसाब रे डिफाइन कराई राइट सो आई डोंट नीड दैट व्हाट आई मीन इज व्हाट इज एविडेंस जनरली आपण कोन बुझुचंती एविडेंस कहले व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हेन समवन टेल्स यू व्हाट इज एविडेंस यस एनीवन व्हाट डू यू मीन बाय एविडेंस आपण जो बुझुचंती कोन ओडिया रे कोन एविडेंस माने कोन जोटा हम गोटे साक्षी गोटे थर गोटे घटना घटे हम जोटा किछि गोटे प्रूफ किछि कलेक्ट करिथांती ओके साक्षी आपण कहले ठीक अछि विटनेस हिसाब रे आपण कहले से कोन कहूची कोर्ट सामने रे ओके ताको हमें टेस्टिमनी बोली देखिबा तो हमें कोन एई टर्म गुडा जनरली इंटरचेंजेबली यूज करछु कोन एविडेंस टेस्टिमनी प्रूफ गोटे टाइप रे यूज करछु तो ओके बट सेगुडा टेक्निकली स्पीकिंग एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ तार किछि किछिटा डिफरेंस अछि जोटा हमें देखिबा ओके सो यू कैन जस्ट टेक डाउन लेखन द फर्स्ट डेफिनेशन देखो जब हमें डेफिनेशन अपन लॉ की जो भी सब्जेक्ट रे पढ़िबे डेफिनेशन इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ओके डेफिनेशन अपन को दीटा प्रकार रो डेफिनेशन अपन कहि पारि गोटे हला वर्किंग डेफिनेशन और फंक्शनल डेफिनेशन जेमति कि एबे हमें जोडा कहलु कि जोडा लिखिबु कि एविडेंस कोन सादा सीधा भाषा रे अपन कहबे जोडा समस्त बुझी परिबे सेटा गोटे वर्किंग की फंक्शनल डेफिनेशन एकेडमिक डेफिनेशन कोन जोड़ा कि टिके टेक्निकल थिबो जोड़ा कि गोटे सेही डोमेन रो एक्सपर्ट जने के देथिबे जेमति आज हमें देखिबा ओके डिफरेंट jurists they have told what is evidence बुझ परले से जिनसोडा देखियो सो परीक्षा रे अनलेस jurisprudence भलिया पेपर अछि जोटे कि थियोरेटिकल आपण सबले वर्किंग डेफिनेशन की फंक्शनल डेफिनेशन ऊपर गुरुत्व देबे सेटा जदी आपण बुझुचंती आपण सेटा लिखिबे then you don't need to mug up things okay घोषिबा आपनकर किछि दरकार होबो बुझि परले आई गेटिंग इट सो जेमति कहले हमें जनरली एविडेंस से बुझुछु कि हम किछि गोटे प्रूफ हे गला कि विटनेस तार ओके कोन कहला तो ताको हमें एविडेंस भलिया नउछु नॉट रॉन्ग ओके बट टेक डाउन जनरली आपण कोन कहबे ओके एटा वर्किंग डेफिनेशन एविडेंस इज ए जनरल टर्म evidence is a general term for any means for any means for any means sir evidence is a general term for any means means for any means used to prove facts for any means used to prove facts okay it's a simple definition general term okay for any means to prove facts गोटे किछि फैक्ट को आपण प्रूफ करछन तो आपण टेस्टिमनी ओरल एविडेंस दे परिबे आपण किछि डॉक्यूमेंट्स आनी कि प्रेजेंट करि परिबे आपण किछि साइंटिफिक एविडेंस दे परिबे लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी डन तो जो भी आपण मींस रे सेटा प्रूफ करूचंती सबु को गोटे अम्ब्रेला टर्म यूज करले ताको हमें एविडेंस कहू ओके नाउ नेक्स्ट पॉइंट रे लिखंतो अच्छा ये जो सब हमर ग्रेट जूरिस्ट्स माने अछंती से माने कोन कहिछन ओके सो टेक डाउन etymology and views of scholars etymology माने कोन रूट वर्ड टा को टू डिराइव ही टर्म टा ओके etymology etymology ओके किंबा तार
से एविडेंस वर्ड रो रूट टा कोठु आछ ओके तो फर्स्ट पॉइंट लिखंतु the word evidence is derived from the Latin word evidere. The word evidence is derived from the word evidence is derived from the Latin word evidere is derived from the Latin word evidere. सर एबिडेरा स्पेलिंग E V I D E ईवीआई R A. हाँ E V I D E R A. Evidera. डीईआरए हाँ D E R A. E V I D E R A. एबिडेरा मींस हाँ evidera. Okay. Derived from the Latin word evidera, which means to ascertain, ASCERTAIN, which means to ascertain or prove clearly, which means to ascertain or prove clearly, which means to ascertain or prove clearly. सर एसेटोन Okay. मीनिंग Ascertain माने गोटे जिनस को एस्टैब्लिश करिबा, that is ascertain. Okay. To establish certainty of a thing. ये लोक एई समय रे एठी थिला कि नहीं established किसे थिला, that is ascertained. The fact has been ascertained. Okay. To establish that something is correct, something is certain, that is ascertained. Okay. Or prove clearly. ठीक तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत स्कॉलर्स माने डेफिनेशंस देइचंती पूरा डेफिनेशन आपन को जानिबा दरकार नहीं ओके परीक्षा रे भी केना हम समय भी नहीं ओके बट सेमेस्टर परीक्षा हो आपनकर अलगा भी को रिटन एग्जाम हो जस्ट जो स्कॉलर्स माने अछंती कि जूरिस्ट माने अछंती तांकर सेंट्रल पॉइंट कोन तांकर डेफिनेशन रो सेटा जानिबार अछि ओके से जो 5 लाइन 10 लाइन डेफिनेशन देइचंती ताकू घोषिबार नहीं तार जो सेंट्रल जिनसटा रहउची सेटा जानिबार अछि सो नेक्स्ट हेडिंग दियंतु व्यूज ऑफ स्कॉलर्स ओके ए एविडेंस रो डेफिनेशन ऊपर व्यूज ऑफ स्कॉलर्स सर व्यूज ऑफ व्यूज ऑफ हाँ स्कॉलर्स हाँ व्यूज ऑफ स्कॉलर्स माइक टा बस तो ठीक आगे व्यूज ऑफ स्कॉलर्स तो फर्स्ट ब्लैकस्टोन रू स्टार्ट कर नॉर्मली ना हमें जेतले लॉ स्टार्ट करू पड़िबा फर्स्ट सेमेस्टर रे प्राय आपनकर सब यूनिवर्सिटीज रे कोन कोंती दी तीनटा जिंस जेमती हमें क्लास 1 2 हे गले ओके प्राय स्टैंडर्ड स्कूल्स रे कोंती गोटे पॉकेट डिक्शनरी रखन राइट सेमती लॉ जे पढ़े ताको फर्स्ट सेमेस्टर रु प्राय सब यूनिवर्सिटीज रे से माने कोंती ब्लैकस्टोन लॉ डिक्शनरी किनिबो that is of course you know that is एबे तो इंडियन एडिशंस भी अच्छी जोड़ा की टिके रीजनेबली प्राइस्ड बट एक्चुअल कॉस्ट बहुत अधिक तार ओके बट इंडियन एडिशन जोड़ा आछि ठीक अछि से गोड़ा आपण यू नो वी कैन यूज दैट बट सेटा ई जनरल फाउंडेशन पे दरकार आपण को कॉलेज रे भी थिबो यूनिवर्सिटी रे भी प्राय एटलीस्ट ब्लैकस्टोन लॉ डिक्शनरी समस्त रखन ओके तो से ब्लैकस्टोन करो तांको पर्सपेक्टिव टा कोन तो नंबर 1 लिखंतु स्कॉलर्स व्यू अंडर रे ब्लैकस्टोन करो व्यू कोन थिला वी आर नॉट गोइंग टू राइट द एंटायर ओके तांकर जोड़ा पूरा डेफिनेशन सेटा लिखिबार नहीं डेफिनेशन रो क्रक्स टा लिखिबार अछि डेफिनेशन रो इंपोर्टेंट और जेमति आपण जजमेंट रो कहउछन्ती ऑपरेटिव पार्ट सेमति
को ऊपर तांको डेफिनेशन टा फोकस करूथिला सेठी की आपन को लिखिबार अछि तो ब्लैकस्टोन कर लिखंतु एविडेंस प्रूव्स और क्लैरिफाइज फैक्ट्स इन डिस्प्यूट अकॉर्डिंग टू ब्लैकस्टोन एविडेंस प्रूव्स और क्लैरिफाइज evidence proves or clarifies facts in dispute okay तापरे नेक्स्ट आसिला टेलर समस्त को माने एका किए को पॉइंट ऑफ व्यू रु कहिचन ब्लैकस्टोन कहउचंदी कि कोनोसी जिंस जोड़ा कि गोटे फैक्ट जो फैक्टा डिस्प्यूट रे अछि ओके ताकू प्रूफ करूची ओके कि क्लैरिफाई करूची ओके सो सेगुडा को आपण एविडेंस बोली कहबे तो नंबर 2 रे टेलर को विषय लिखंतु टेलर मीन्स ऑफ प्रूविंग और डिस्प्रूविंग फैक्ट्स ता अर्थ हला से कहउचंदी अकॉर्डिंग टू टेलर ओके यदि पूरा आपण सेंटेंस लिखिबे एविडेंस is the means of proving or disproving evidence is the means of proving or disproving facts under judicial review means of proving or disproving facts under judicial review हला जोटा adjudication under रे अछि जोटा कोर्ट डिसाइड करछन गोटे जिंस ओके गोटे फैक्ट सेटा प्रूफ की डिस्प्रूफ केमती हबो ना बाय द मीन्स ऑफ एविडेंस तो जो जिंस आपण प्रेजेंट करूचंती जोटा गोटे फैक्ट को प्रूफ करूची कि डिस्प्रूफ करूची ओके आउ से फैक्टटा जुडिशियल रिव्यू किबा एडजुडिकेशन अंडर रे अछि ताकू आपण एविडेंस बोली कहउचन दिस इज द कांसेप्ट ऑफ टेलर ओके सो अकॉर्डिंग टू टेलर एविडेंस ओके इज मीन्स ऑफ प्रूविंग और डिस्प्रूविंग फैक्ट्स अंडर जुडिशियल रिव्यू तापरे बेंथम करो लेखंतु नंबर 3 according to Bentham evidence is anything according to Bentham evidence is anything that persuades the existence that persuades PERSUADES the existence or non-existence of another fact anything that persuades the existence or non-existence of another fact okay गोटे फैक्ट राइट सेटा एक्चुअली ठीक एग्जिस्ट करूची कि एग्जिस्ट करूनी राइट ताकू जोटा प्रूफ की डिस्प्रूफ करूची परसुएट करूची परसुएशन माने कोन टू परसुएट समथिंग ओके ता पछरे पड़थिबा किमा ताकू प्रूफ करबा इन एसेंस ओके राइट टू काइंड ऑफ फोर्स इट सेटा हला परसुएट सो एनीथिंग दैट परसुएट्स द एक्जिस्टेंस और नॉन एक्जिस्टेंस ऑफ अनदर फैक्ट सेटा अकॉर्डिंग टू बेंथम समस्त एका जिंस कहउचंदी खाली लैंग्वेज ता अलगा ओके आउ फोकस कार जेमति कि टेलर जुडिशियल रिव्यू रो कांसेप्ट से तरह आनले कि जा कोर्ट अंडर रे जो जिंसटा मैटर एडजुडिकेट होची ओके नंबर 4 रे लिखंतु विगमोर WIGMORE फोर्थ जूरिस्ट विगमोर according to Wigmore evidence is the knowable facts माने कौन जोटा कि एक्चुअली आपण जानी परिबे knowable ठीक अछि so suppose there are some things you cannot know सेटा असंभव किए कोन भाबुची ओके ता माइंड रे कोन अछि सेटा knowable fact नो ता इंटेंशन जोटा कि हमें लॉ रे आगु को पढिबा ओके मेंस एरिया रे दैट इज अ डिफरेंट मैटर ओके बट ता मुंडो रे कोन चलची तार एक्चुअल इंटेंशन कोन
से कहूथिबो मोर सांग बट मे बी ता इंटेंशन अलग किछि थिबो ओके तो कहार माइंड टा रीड करिवा ऑब्वियसली सेटा नोएबल फैक्ट नुह तेणु एविडेंस है से सब जिनस ओके तेणु एनीथिंग which is highly probabilistic and is not certain and is futuristic ताकू आपण एविडेंस कहि परिबेन ठीक अछि जोडा कॉन्ट्रैक्ट रे आपण पढुचंदी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स करके एग्रीमेंट्स करके सपोज मु कहबी कि से यू नो इंडिया 2000 नेक्स्ट जेतर वर्ल्ड कप होची तो से वर्ल्ड कप टा इंडिया जीतिबो ठीक अछि एटा को जगह रे मोडे एविडेंस हिसाब रे ताकू प्रेजेंट कर परिबी काना एटा कोन गोटे नोएबल फैक्ट जो जिनसटा 3 वर्ष परे हबो कि 4 वर्ष परे हबो ओके so Wigmore कहउचंदी कि the fact has to be knowable so according to Wigmore evidence okay means the knowable facts presented before courts to influence judgment बहुत सादा सीधा और डायरेक्ट सीधा ओके डेफिनेशन देछन presented before courts to influence judgment that is what Wigmore has to say तापरे come to Stephen last हमरो जूरिस्ट स्टीफन को विषय रे कहीं पढ़िया पड़िबो कहीं कि ना आपण को इंडियन एविडेंस एक्ट ओके 1872 रो ड्राफ्टिंग रे तांकर बहुत बड़ हाथ थिला so Stephen so according to Stephen evidence is anything that helps inferring the truth evidence is anything that helps inferring the truth like words documents or actions like words documents or actions like words documents or actions हेला एडा सब कोन जूरिस्ट माने कोन सब कहछन राइट सो दिस इज व्हाट स्टीफन हैज सेड सो एगुडा जस्ट खाली ता माने समस्त एकाई जिंस कहउचंदी किछि जण गुरुत्व देइचंदी कि सेटा कोर्ट को सामने रे थिबा दरकार ताहेले सेटा एविडेंस हो ठीक अछि जेंति कि टेलर कहले अंडर जुडिशियल रिव्यू विगमोर कहले टू इन्फ्लुएंस जजमेंट दैट मींस इट मस्ट बी अंडर एडजुडिकेशन इट मस्ट बी ओके अंडर द ओके ambit of any court proceeding सेटा आपण पाउछ राइट नेक्स्ट तो एटा कोन हला एटा हला स्कॉलर्स माने कोन कहछ ओके तापरे नेक्स्ट statutory definition माने not a definition which is given in your statute Indian Evidence Act and Bharatiya Sakshya Adhiniyam ठीक अछि so next heading दियंतु statutory definition सर आपण एक एविडेंस बुक पढौचंदी हाँ ओके मु काली जो बुकटा रेफर करिया पे कहिथिली पर्टिकुलर ठीक अछि से थ्रू ही सेटा ही बहुत स्ट्रक्चर्ड फॉर्म रे देखि एंड अदर बुक्स आल्सो यू कैन फॉलो ठीक अछि अदर बुक्स आल्सो यू कैन फॉलो बट आई विल बी फॉलोइंग दिस बुक मु जोटा भी जो भी स्टैट्यूट टा पढेबी सेटा म आपन को आगु कहि देबी ओ बुकटा हमें रेफर करिबा बाय दैट बुक ओके सेटा सबटू बेस्ट द हार्ड कॉपी टा रखिबे ता देरु ऑफ कोर्स बहीटा धरंतु गोटे चैप्टर अछि 25-30 पेज रो एग्जाम ओरिएंटेशन रे किंबा परीक्षा रे नोट्स लिखिया पे हमको तो इंपोर्टेंट जिंसटा ही लिखिबार अछि ना तो सेटा मु आपन को डिक्टेट भी कर दउछि प्लस आपनकर ऐप रे नोट आकार रे सेटा
अपलोड भी हो जाउछ ओके तो आपण जदि निज टाइम रे बहुत जण अछंती तांगर टाइम कंस्ट्रेंट अछि के चैम्बर जाउछंती कि कोन करछन तो ऑर्डर वाटा भी से माने क्लास करि परनांती सो आपण जत्ते बेले फ्री रहबे इधर वीडियो देखि कि नोट करियोटा टिके अधिक टाइम लागिवो काहे कि ना हम अलग भी बहुत बड़ जिंस डिस्कस करछु ओके आपण खाली नोट मेकिंग जदि करियर अछि यू कैन टेक हेल्प ऑफ द ओके पीडीएफ्स व्हिच आर गिवन इन योर ऐप पीडीएफ रा आपण रेफरेंस पे अछि सेगुडा आपण ताकू एक्सटर्नली डाउनलोड कर परिबेनी किंबा ताकू शेयर कर परिबे बट ऐप को डाउनलोड हे जिवो सपोज आपण इंटरनेट रो प्रॉब्लम अछि तो गोटे पब्लिक वाईफाई को पळेबे जा वीडियोस जा ऐप माने जा डॉक्यूमेंट सेटा डाउनलोड कर देबे तो से ऐप तो रहला सेटा जो पंदा आपण ऐप टा तार जो स्टोरेज टा को खाली करिवेनी कैश क्लियर करिवेनी से रहला सेमति आपण को इंटरनेट दरकार होबनी वीडियो भी आउ आपणकर जाडा पीडीएफ भी आपण एक्सेस कर परिबे विदाउट इंटरनेट बट ताको इंटरनली माने एक्सटर्नली शेयर करिके सेगुडा करियो पर्सनल यूज पे आपण ताको सेटू नोट्स करिके सेडा सब करते ओके सो स्टैट्यूटरी डेफिनेशन जल्दी कि स्टैट्यूटरी डेफिनेशन माने कोन इंडियन एविडेंस एक्ट रे कोन कहउची भारतीय साक्ष्य अधिनियम रे कोन कहउची एकई जिंस कहउची एतिक कथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम रे कोन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस रा मिसेज करी ओके दैट इज द थिंग सो टेक डाउन both the Indian Evidence Act and the Bharatiya Sakshya Adhiniyam PSA khali lekha both the Indian Evidence Act and the Bharatiya Sakshya Adhiniyam define evidence in more or less similar manner in more or less similar manner the BSA continue the BSA specifically adds electronic records and electronic evidence specifically adds electronic records and electronic evidence in the definition तो हमें जनरल कॉन्सेप्ट पढ़िबा हमें कहू कोन सेम जिंस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है ठीक अछि हमें एमती भी कहू कि डिजिटल रिकॉर्ड जा ओके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है बट टिके तीन चारटा क्लास पर हमें डिस्कस करिबा सेटा एका नो डिजिटल रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रे किछटा डिफरेंस अछि को सोर्स रे सेटा स्टोर होउची से ताको नै कि हमें ताको डिफरेंशिएट कर बट सेटा टिके हमें व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस व्हाट इज ओके those things how it is stored and all टिके बेसिक्स जानला परे सेठी कि जिवो ओके सो according to statutory definition माने बीएसए रो हो कि आईए रो हो according to statutory definition evidence includes oral evidence comma documentary evidence including electronic records documentary evidence including electronic records ओके तापरे तो ए पर्यंत बुझी पारे थरे टिके ताको देखंतु जस्ट गो थ्रू इट इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ओके बेसिक ऑफ एविडेंस ए पर्यंत हमको एथिकली बुझियार अछि एविडेंस माने कोन ठीक अछि तो आउ की कोन कहिचंदी एविडेंस ऊपर किसी की जीजा कहि दंत सेटा एते इंपोर्टेंट नाही एविडेंस जनरल गोटे ले मैन को बदी बुझेबार अछि ओके मु केमती बुझे कि कोनोसी गोटे जिंसो जोटा कोर्ट रे चलची और तुमे ताको प्रूफ करिया पे चाहछो तुमे जो भी बाटरे प्रूफ करो सेटा गोटे अम्ब्रेला टर्म ता पे हैला एविडेंस हैला और सेटा भी बेस्ट वे टू टेस्ट whether you have understood a concept
suppose that there is a person who is a layman, किछि जाननी, okay, technical knowledge तार नहीं, ताकू मते बुझेबार अछि गोटे टर्म, जिते बड़ टेक्निकल टर्म है, okay, ताकू मते बुझेबार अछि, तो मु केमिति बुझे, को भाषा रे ताकू बुझे, को एग्जांपल रे ताकू बुझे, जदि मु ताकू बुझे दे पाउछि ताले मो कांसेप्ट पूरा क्लियर अछि. So these are some of the tests you can try. ठीक अछि, जेमति हमरो से फेलिसिटेशन सेरेमनी रे भी जणे गेस्ट जो कहउतिले गांधीजी टैलिस्मैन, जानछन तो गांधीजी टैलिस्मैन कोन कि लाइफ रे स्पेशली एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जुडिशियल ऑफिसर कि किछि गोटे ऑफिशियल कैपेसिटी रे कि जनरली भी, ओके, जदि गोटे पॉइंट रे मु जानि पाउति मते कोनटा करिवार अछि, बहुत गुडे बाट अछि, मते को बाटटा नबार अछि, ओके, then what Gandhiji said was you consider कि को एक्शन टा को बाटरे गले सबुठु पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, जहा पाखरे कोनोसी सेमती सुविधा नाही, ताकू मैक्सिमम हेल्प कोथरे ही परियो. मु पाखरे पांचटा बाट अछि, जो बाटरे जीवी सेटा मते डिसाइड करिवार अछि, बट मु डिलेमा रे पडिछि, एथिकल डिलेमा, मोरल डिलेमा, ओके, जा भी हो को बाटरे जीवी, गोटे सहज बाट सब अछि आ केतेटा कष्ट बाट भी अछि, which path should I take? So गांधीजी जनरली सेही जिंसटा ऊपर फोकस कले कि जो बाटरे सबुठु पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, से कहिदिले कि तुमे जीवन रे सबुठु पुअरेस्ट लोक, सबुठु हेल्पलेस लोक जाहाको देखिछो ता मुहटा माइंड को आनो कि को बाटरे गले ताकू मैक्सिमम हेल्प करे, ओके, देन आखि बंद करके से बाटरे चल, ओके. सो बेसिकली जोटा कि हम शास्त्र विषय कुछ दैट जदि आपण धर्मर रक्षा करिवे, बाय धर्म आई मीन राइटियसनेस, द करेक्ट थिंग, then dharma will protect you, okay. So anyway, that is the root concept of evidence कि गोटे जिनसटा कोर्ट रे चलची ताकू प्रूव करा हबो कि प्रूफ न करा हबो, ओके, जे जो मेथड रे आपण सेटा करचंदी सेटा को आपण एविडेंस भितर नै पारि, जनरल जिंस जोटा बुझियो. आ आमे जो कहूछु एटा प्रूफ हबो, विटनेस टेस्टिमनी हबो, से ठीक अछि मोर और लेस, बट किछि किछि आपनकर टिके टेक्निकल डिफरेंसेस अछि, ओके. तो नेक्स्ट टेक डाउन तो ए टर्म सुडार बेसिक मीनिंग हम टिके बुझिबा. So take down difference between evidence, testimony and proof. Difference between evidence, testimony and proof. So evidence already हमें देखी कौन तार overall definition. So evidence is a general term for any means. Evidence already अपन लिखी चंदी, you can just copy from that. Evidence is a general term for any means used to prove facts. Used to prove facts. Okay, so it is evidence. It is umbrella term. Okay. तापर आसिला टेस्टिमनी. नेक्स्ट लिखंतु टेस्टिमनी. The testimony कौन है? It is basically oral evidence, witness जहाँ कहूँ. Okay, that is testimony, witness testimony जोड़ा कहूँ. So testimony है ला oral evidence from witnesses. Oral evidence from witnesses. Okay. तापरे proof. What do you mean by proof? So लिखंतु proof, the final result or impact of evidence provided. The final result or impact of evidence provided. सेटा हला proof. Final result or impact of evidence provided. That is the proof.
ओके सो नेक्स्ट पॉइंट तो देखो एविडेंस है अम्ब्रेला टर्म आम जदि मैथमेटिक्स बेसिक मैथमेटिक्स मन पकेबे स्टैंडर्ड 8 9 10 से करथिले सेट थ्योरी रो कांसेप्ट थिला सबसेट थिला ओके सेट थिला और सुपर सेट थिला राइट से टाइप रो कांसेप्ट इनफैक्ट जेतोला हम आंसर लिखिबा ए गुडा भी हमें यूज करि परिबा राइट फॉर एग्जांपल टेक डाउन एविडेंस इज ब्रॉडर and includes evidence is broader माने तारा कांसेप्ट ता स्कोप ता ब्रॉड से जो अम्ब्रेला में कहूछु ता अंडर रे ए अलगा जिंसोडा भी आसी जाउछ टेस्टिमनी प्रूफ एंड ऑल ओके and includes both oral and documentary evidence and includes both oral and documentary evidence continue testimony is a subset of evidence testimony is a subset of evidence got it much well so take 5 minutes read what you have written जहाँ लिखी जन थोड़ा पढ़ो किसी यदि एथरे conceptual level रे बुझिवार असुविधा होची then you can ask me else we'll go to the next thing okay right any doubts here then next person that is law and law of evidence generally law or law of evidence okay तारो टिके हमें comparison करियो so take down the heading law versus law of evidence okay तो आ भीतर कौन डिफरेंस हमें देखो लॉ आउ लॉ ऑफ एविडेंस तो फर्स्ट लॉ ऑफ जनरल जिनसटा ओके लॉ रो डेफिनेशन कौन जूरिस्प्रूडेंस तरीका जतले आपण पढी व्हाट इज लॉ ये कौन डिफरेंट सब डेफिनेशंस देछन ओके सबुटू कॉमन डेफिनेशन हैला किछि गोटे सेट ऑफ रूल्स ओके जोटा गोटे अथॉरिटी ताकू पास करूची ओके आउ लोक माने सेटा फॉलो करछन ठीक अछि तार बहुत गुडे किए कहि कमांड ऑफ सोवरेन किए कोन सो कहि राइट सो जनरल जिंस आपण कहि परिबे तो टेक डाउन फर्स्ट हैला लॉ it governs rights and duties okay simple we are not going into the definition of law okay law माने कोन बेसिकली बुझिया भाई it governs the rights and duties okay for example अपन law आपण को ऊपर केमती काम करूची लेट्स से हमें रास्ता रे चालूचू पेडेस्ट्रियन लॉ हैला कि ट्रैफिक लॉ हैला गोटे गाड़ी टे चलोचन then that law gives you certain rights and also has
expect some duties from you. ठीक अछि अपन जदि गाड़ी चलाउछन टू व्हीलर चलाउछन ताले हेलमेट टे पिंदिबे जा जा ड्राइविंग लाइसेंस बार करियो व्हाटएवर ए सब जिंसोडा कहछन राइट सो लॉ गवर्न्स राइट्स एंड ड्यूटीज ओके आउ जो जिंस रे अपन करा राइट्स आउ ड्यूटीज ओके के अपन को राइट्स दोची ड्यूटीज दोची राइट्स दोची कि नोची ओके केतबे राइट्स में भी टेकन अवे आल्सो सपोज penal provisions अपन एटा कले या हबो so your rights are taken away ठीक अछि so anything which gives you rights which determines your rights or takes away the rights from you and determines your duties okay ताको आपण substantive law कहउछ okay substantive law कहउछ evidence law टा सेटा हमर procedural law अंडर आपण पढुछन okay so take down next law of evidence the first law it governs rights and duties okay and it is substantial right substantive law apna koibe it is substantive law it governs rights and duties okay kichi rights douchi kimba jodi rights apna ko niya habo ta conditions koi douchi ei jinso kale rights niya hijibo okay au duties kichida apna ko upare se okay impose karuchi law of evidence ko go so next point take down law of evidence it is part of procedural law and guides how facts are proved in court. It is a part of procedural law and guides how facts are proved in court. Okay. Next point, Lekondu. Rights and duties. Rights and duties are concomitant in nature. CONCOMITANT concomitant माने they go together ठीक अछि ये अलग अलग generally नुह concomitant in nature rights and duties are concomitant in nature CONCOMITANT concomitant माने going together you want rights then obviously you have to follow some duties आमे constitution पढला वाला पढिबा आम देश रे कोन fundamental rights अछि और fundamental duties भी अछि ठीक अछि fundamental rights आमे सेटा claim कर परछु कोर्ट रे जेंकी ताको enforceable करि परछु fundamental duties ता voluntarily छडा हिची citizen को ऊपर कि citizen मानिबे ताको ठीक अछि जदि न मानिबे ताले ताको अगेंस्ट एक्शन हे परिबो केवल से fundamental duty ताको मानिलेनी बोली ना तापय अलगा लॉ अछि फॉर एग्जांपल आपनकर गोटे फंडामेंटल ड्यूटी हैला टू रेस्पेक्ट ऑल द नेशनल सिंबल्स से थरे आपनकर नेशनल एंथम गला आपनकर फ्लैग गला ठीक अछि तो मु जदी डिसरेस्पेक्ट करूची नेशनल एंथम को कि नेशनल फ्लैग को so action will be taken against me but not because I violated a fundamental right आपनकर फ्लैग कोड अछि ठीक अछि so national anthem पाई भी सेमती स्टैट्यूट्स अछि कि जे ताको ओके डिसऑनर करिवे ताको अगेंस्ट कोन पेनल एक्शन निया हबो सेहित पई एक्शन निया होची बट इन मेनी कंट्रीज लाइक रशिया लाइक इजराइल तांकर सेठी फंडामेंटल ड्यूटीज आर ओके मैंडेटरी फॉर द सिटीजन्स वॉलंटरी सेटा नुह एंड दे हैव पेनल प्रोविजंस आल्सो जदि नकले फंडामेंटल ड्यूटी टा ताले आपन को अगेंस्ट एक्शन हबो इंक्लूडिंग क्रिमिनल एक्शन ठीक अछि फॉर एग्जांपल यू नो दैट इन इजराइल एंड इन मेनी अदर कंट्रीज देयर इज द प्रैक्टिस ऑफ कॉन्स्क्रिप्शन अर्थ कोन बाध्यतामूलक सैन्य सेवा आपण जा भी आपण डॉक्टर अछन सपोज तो आपण मेडिकल कोर रे जेंकी जॉइन करिवे जुदी उद्योग होला कोन होला केति की वर्ष आपण को जा भी हेले you have to join okay as join in the army many countries रे से जिंसडा थिला ठीक अछि हमर एठी आर्मी रे केबे सेमते नथिला बट इमरजेंसीज बेले ता परे वार्स परे हमर एनसीसी रे गुटे टाइम रे ओके सेटा मैंडेटरी करथिले बट दैट इट वाज टेकन बैक इट इज कंप्लीटली वॉलंटरी सेफ बाय आवर फोर्सेस आर मच बेटर
इंडियन आर्मी इज मच बेटर कम नंबर भी थिबे और शत्रु अधिका थिबो ताले भी आमे जेमति गलवान रे हला ठीक अछि चाइना रे भी से ओके conscription in the sense that you have to serve the army for एतिकी वर्ष एतिकी टाइम पर्यंत आपको आर्मी रे सर्व करिया पे पड़िबो ठीक अछि तो मैं काई कहली ना केते गोटे देश रे फंडामेंटल ड्यूटी टा भी बाध्यतामूलक आपण जदि न करिवे ताले आपनको अगेंस्ट पिनल एक्शन रहइबो हमर सेमति नु ठीक अछि so although fundamental duties are there every citizen of india ता पई फंडामेंटल ड्यूटीज अछि से यदि करूनी ओके ताको पनिश एतिकी केवल एतिकी पई कराई परिबोनी कि से फंडामेंटल ड्यूटी टा कलेनी ओके कहीं कहले एते गुडे जिंस कि जो हमें कथड़ा कहूछु राइट्स एंड ड्यूटीज आर कॉनकमिटेंट इन नेचर मींस दे गो हैंड इन हैंड ठीक अछि आपण एमति खाली कहि पारि मोर एते राइट्स एते राइट्स एते राइट ड्यूटी मु किछ करिवे ठीक अछि मते फ्रीडम ऑफ स्पीच दरकार मते फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दरकार जहा इच्छा से कहबी ठीक अछि आउ विदेश को जाई कि देश नारे आडू छाडू भी कथा हेबी right but amaro constitution and all is very liberal in those matters ठीक अछि आमे जदि टिके स्ट्रिक्ट चाइना भलिया आउ इजराइल भलिया हुंतु ओके ताले हमरो 70% पॉलिटिशियंस एग्जिस्ट करंते ओके से तो करछन ना बहुत जण एठी रहिबे एठी सब प्रकार रो फैसिलिटीज यूज करिवे जो देश कथा कहउछन ए देश रो भलो से देश रो भलो सेठी रहिबे नै रहिबे एठी आ बाहर को जाई कि ए देश विरुद्ध रे कहबे ठीक अछि anyway so next point asandu so eta hala rights and duties are concomitant in nature right तो एठी हम दीटा जिंस कहलु प्रोसीजरल लॉ आउ सब्सटैंटिव लॉ ठीक अछि so what are these things procedural law कोन substantive law कोन एई point of view रे जदि हमें देखिबा okay so just go through what you have written okay I'll just take a break for 5 minutes and we'll be back okay just go through what you have written जदि ता भीतर किछि डाउट रहइबो ताले मते पछे okay so we'll continue ताले नेक्स्ट टाइम देखिबा प्रोसीजरल और सब्सटैंटिव लॉ राइट so substantive law कोन जोटा हमें ऑलरेडी देखिजु it defines rights and duties it gives you rights and duties or maybe sometimes it takes away rights and duties okay penal provision जदि जदि जणे एमती करूची ताले तारा ई राइट टा नि आइजु okay so first लिखंतु
substantive law, so procedural versus substantive law. हमें detailed तार distinction को जाऊँ. From the point of view of evidence laws, okay, कहीं कि अपन कहते evidence law टा गोटे procedural law. Okay, so take down number one. Substantive law defines rights and duties. Substantive law defines rights and duties like the Contract Act, IPC, etc. Like the Contract Act, IPC, etc. Whereas procedural law, defines rules to enforce them. Procedural law defines rules to enforce them. Example, CPC evidence, okay, procedural law. Examples, Code of Civil Procedure, okay, or Civil Procedure Code and your Evidence Act. Okay, next point. So Evidence Act, we know it forms a part of procedural law. So just take down that. Evidence Act forms a part of procedural law. Evidence Act forms a part of procedural law. अच्छा जो जिनसटा मु कहली कि आमे फंडामेंटल क्लास जेतले स्टार्ट करूछु नॉर्मली एविडेंस रू स्टार्ट हुए किबा केते जगह में भी से कॉन्स्टिट्यूशन रू स्टार्ट करता है व्हाई बिकॉज़ आपण क्रिमिनल साइड को जानतु कि सिविल साइड को जानतु ओके जहा भी हेले आपणकर एविडेंस टा केमती निया होची आउ तारी बेसिस रे आपणको फाइनल ओके जजमेंट टा आसुची बुझछंतो सो that is the reason you should know कि evidence टा केमिति present और evaluate करा होची. Okay, so take down next heading. Importance of evidence. Okay, जो तरह भी अपन civil रे भी हो कि criminal side रे भी हो. Okay, take down. Overall, there are 5 stages of a trial. There are 5 stages of a trial. Okay, in a criminal case, or a civil case. Okay. जोटा आपण stages of trial, but that will be little bit different जेतला आपण BNSS रे सेगुडा पढिबे. Okay. So first लेखंतु in civil case the first stage relates to filing of suit. The first stage relates to filing of suit, comma the second stage relates to framing of issues. In the third stage, evidence is presented. In the third stage, evidence is presented. Okay. In the fourth stage,
In the fourth stage, judgment is given. In the last stage, fifth stage, the decree is enforced. The decree is enforced. Similarly, next paragraph. Similarly, in a criminal case, the first stage is the filing of complaint or FIR. The first stage is the filing of complaint or FIR. The second stage relates to framing of charges. The second stage relates to framing of charges. The third stage relates to presentation of evidence. The third stage relates to presentation of evidence. The fourth stage relates to judgment. And finally, the fifth stage relates to, acquittal or sentencing. Fifth stage relates to acquittal or sentencing. Hello. So, note write out a tabular form with each, right? So next point like on to thus, in both cases, mane civil case review, criminal case review. Thus, in both cases, evidence is presented during the third stage. Thus, in both cases, evidence is presented during the third stage. तापरे से जो हमरो हेडिंग कौन थिला इंपोर्टेंस ऑफ एविडेंस लॉ ओके तो नेक्स्ट पॉइंट लिखंतु it resolves it means the evidence law it resolves disputes through factual verification ta underline karantu it resolves disputes through factual verification underline factual verification all factual verification okay evidence रे आपण से जो जिनसडा कोर्ट ताको एडजुडिकेट करचंदी ओके से सेटा फैक्चुअली वेरीफाई करचंदी से जिनसडा ओके फैक्ट ता प्रूव होला कि डिस्प्रूव होला कि किछि हे परलानी ना प्रूव होला ना डिस्प्रूव होला नॉट प्रूव ओके सो दैट द कोर्ट इज ascertaining ठीक अछि तो सेतरे कोन ना देन disputes are resolved through that so resolve disputes through factual verification ओके देखो तो नोट्स करिवे मॉर्निंग क्लास रे मु कहउतली सेटा आपन को एनी नोट्स ले पर्सनल नोट्स बनाबो गोटे पाखरे लिखिबे ओके वन साइड यू राइट ऑन वन साइड ऑफ द पेपर अदर साइड लीव इट ब्लैंक काहेना सेतरे आपनरा यू विल ऐड पॉइंट्स यू विल ऐड करंट थिंग्स जो जिनसोडा चेंज हेची अमेंडमेंट्स हला नुवा केस लॉ आसिला एक्सेट्रा ता पछरे लिखा सो दैट गोटी जगह रे सब रहबो ठीक अछि So, second point, the first it resolves disputes through factual verification, underline करो. This art of underlining is also very important. जेतोळे आपण कोनोस गोटे आंसर लिखिबे कोनोसी परीक्षा रे हो कि सेमेस्टर रे हो जोथरे भी आपण आंसर लिखुचंती गोटे पेज रे जेति की वर्ड आपण यूज करले तारो 10% generally maximum 10% can be underlined. These may be words or phrases. Okay. एमति नो कि सब you know पूरा 10% अधिक अंडरलाइन करली ताले लाभ हो किछ रहबो आपण काय अंडरलाइन करचंती काहे कि ना इंपोर्टेंट पार्ट उडा जेमती आखिया को आसी बेटर किछ बेल सो नेक्स्ट पॉइंट लिखंतु तारा जो
Importance कौन evidence law. It prevents endless irrelevant submissions by parties. It prevents endless ये गोटे देला तापर ताको देखि से गोटे दबो ताको देखि से गोटे दबो ओके चली थिबो सेमती लिटिगेशन सरीबोनी केतले. It prevents endless comma irrelevant submissions by parties. Irrelevant submissions by parties. Next point. It guides the court. It guides the court on number one, what facts may be submitted. What facts may be submitted. There may be many facts. जो fact आपन केस संगे related अछि. Okay, मैं relevance रे देखिबा सेटा next chapter रे. सेटा ही कोर्ट अलाउ करिवे. गोटे जिंस जोडा completely irrelevant अछि. Okay, तो सेगुडा को अलाउ करिवे समय नष्ट हो सेते. Okay, आउ हजार प्रकार ancillary issues आसीबो जोडा की केस संगे related नो. So what facts may be submitted? Number one. So सेतरे से कोर्ट को गाइड कोड. Okay, evidence law. Second, how facts are to be proved. को मोड रे केमिति आपण facts रा proof करिवे. How facts are to be proved. So it guides court on how facts are to be proved. Now third है weight of each piece of evidence. Some evidence, okay, have more weight. माने तारा evidentiary value टा ढेर अधिक as compared to आउ गोटे जार weight एते हेवी न होई पर बुझि परले. So third है weight of each piece of evidence. Which evidence is stronger, which evidence is weaker. Okay. Next, take down the objective of law of evidence. एटा अपन नीचे भी कहि परिबे. Objective कौन law of evidence. प्रथम तो फंडामेंटल तार ऑब्जेक्टिव है दी प्रॉपरली ओके जो एविडेंस करिका दिया हबो को मोड रे दिया हबो कोन एविडेंस दिया हबो ऑल दिस थिंग्स आर देयर. सेकंड जिंस है कि आपनकर समय जेमती कोर्ट रो बिकॉज़ टाइम इज इक्वल टू रिसोर्सेस. ओके सो द टाइम एंड अदर रिसोर्सेस ऑफ द कोर्ट आर नॉट वेस्टेड ऑन इररिलेवेंट एंड यूजलेस मैटर्स. ठीक अछि. तेणु से कोर्ट को गाइड करूची कि एई जिंस केस संगे रिलेटेड सेटा ही दरकार. जो जिंस केस संगे रिलेटेड नो ताको छाडिया पे पड़ियो. अदरवाइज यू नो बहुत अधिका टाइम लागिबो बहुत अधिका पब्लिक मनी वेस्ट हो. ओके सो टेक डाउन ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस. नंबर 1 लिमिट एंड रेगुलेट investigations for judicial efficiency. To limit and regulate investigations for judicial efficiency. So limit and regulate underline karibe, judicial efficiency underline karibe. To limit and regulate investigations for judicial efficiency. Next point. To prevent delays and promote accurate justice. To prevent delays and promote accurate justice. Okay. गोटे परे गोटे डेट्स नौथिबे तो एबे एविडेंस लॉ रे भी चेंज आसलानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम रे एंड अदर लॉस. ओके जो तरेगी एत्ती के दिन भीतर आपन को ट्रायल सारिया पे पड़े. Okay, so it prevents delays and promotes accurate justice. It are major objectives of law of evidence. Okay, so that time is not wasted, resources are not wasted. Right? Our system iti kon achi India re. How most of the Southeast Asian countries, जो माने कोनोसी गोटे समय रे आपण कहि परिबे ब्रिटिश अंडर रे कि फ्रांस अंडर रे कि कारी अंडर रे से माने ओके कॉलोनी थिले. आमे ब्रिटिश कॉलोनी थिलु.
राइट तो प्राय ये सब कॉलोनियल सिस्टम्स रे आपण देखिबे कंट्रीज रे सेमानकर जो लीगल सिस्टम टा अडॉप्टेड हेची दैट इज कॉल्ड एडवर्सरियल ओके सिस्टम एडवर्सरियल सिस्टम ऑफ एविडेंस ता अर्थ कोन ना इटी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जे थिबो पुलिस फॉर एग्जांपल इन्वेस्टिगेशन भी तारी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहिबो सो डुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी तार इन्वेस्टिगेशन भी से करिवो ठीक अछि एंड लॉ एंड ऑर्डर रो भी से चार्ज रे थिबो ओके सो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज साउथ ईस्ट एशिया रे से इंडिया हे गला जते आपण एपडे देखते राइट नेपाल रु नै कि भूटान म्यांमार एंड ओके आपणकर जते सेपट बांग्लादेश एंड सेपट साइड रु भी ओके थाईलैंड वाइलैंड से सब से they all have direct or some form of adversarial system of evidence or adversarial system of okay law ता माने कोन ना एथरे पुलिस जे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जे ओके से ही बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर ताको मेन काम पुलिस रो मेन काम कोन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करी ताको इन्वेस्टिगेशन रो भी काम दिया ओके किंतु बहुत गुड़े यूरोपियन देश रे आपण देखिबे तांकर सेठी कन्विक्शन रेट इज वेरी हाई काई की कन्विक्शन रेट तांकर एते हाई हमर एते लो गोटे इंस हला तांकर सेठी जो ओके इन्वेस्टिगेशन उडा हुए सेगुडा सब जुडिशियल सुपरविजन अंडर रे हुए जजेस माने करंती ओके मैजिस्ट्रेट्स माने सेटा करंती राइट दैट इज कॉल्ड इंक्विजिटोरियल सिस्टम ओके तो नेक्स्ट पॉइंट लिखंतो adversarial versus inquisitorial system ओके गोटे हला आपनकर adversarial system आ गोटे inquisitorial system okay inquisitorial system so first point देखंतो India and most of the Southeast Asian countries एटा कोन होय कि जेते सब कॉलोनियल कंट्रीज अछि से माने तांको लॉ टा लीगल सिस्टम टा तांकर कॉलोनियल मास्टर्स को नै छै लेट्स से अफ्रीकन कंट्रीज भीतर बहुत गुडे अफ्रीकन कंट्रीज फ्रांस आगुरु रूल करथला तांको लीगल सिस्टम भी फ्रांस हिसाब रे हिच हमर एठी जेतु ब्रिटेन रूल करथला एते समय पर्यंत तो ब्रिटेन रे रहिच किंतु किछिटा पार्ट्स रे जोटी ब्रिटेन रूल करू नथिला ओके आ सेठी अलगा कोनोसी पावर रूल करथला गोवा को नियंत्रण गोवा रे पोर्टुगीज रूल थिला इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस 1960s ऊपर ओके हमरा एठी पोर्टुगीज रूल थिला गोवा रे तो तांकर जो लीगल सिस्टम टा ओके ऑफ कोर्स नाउ आपण देखिबे बिकॉज़ हमर तो इंटीग्रेटेड जुडिशियरी इंडिया रे तेनु दैट इज ऑल आवर लॉज आर एप्लीकेबल इन गोवा बट स्टिल आपण जे देखिबे गोवा रे किछिटा फैसिलिटीज अछि तांको लोक दिया आइछि जोटा से पोर्टुगीज लॉ रो आंचन ओके फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म सिविल कोड हमर एपटे आर्टिकल 44 रे दिया आइछि कॉन्स्टिट्यूशन रे यूनिफॉर्म सिविल कोड ता ऊपर एते सब कथावार्ता एते डिबेट्स एते कंट्रोवर्सी चलछि बट तांकर तो आगुरु अछि प्रथम पोर्टुगीज जतरे गले ओके तो निजो इच्छा रे गले नि ताको पुश करा हला किबा टिके मोर डायरेक्ट ओडिया रे कहि गले ताको तोड़ा गला ओके से पोर्टुगीज मानु से तो जीवा में रेडी नथले आमो इंडिपेंडेंस परे आम देश रे दीटा जगह थिला जोटी की फॉरेन पावर्स बसथिले गोटे सिटी गोवा रे आ गोटे पांडिचेरी रे एबे जोटा पुडुचेरी सेठी फ्रांस वाला थिले तो तांको रिक्वेस्ट कला परे सीधा निजे पळेले तांको बेसी किछि करे पड़ला आउ बट ए माने जाउ ही नथला बहुत थोर कुआ गला ओके देन देयर वाज अ स्मॉल काइंड ऑफ ए वार तो ताको कहबानी स्किर्मिश ओके स्किर्मिश माने गोटे छोटिया गोटे फोर्स टा यूज करा हला ओके
से तबरे पळेले से जा भी हो से मानकर काई एते एग्जांपल देली ना गोवा रे तांकर जो जुडिशियल सिस्टम रे केते जगह रे केते लॉज रे आमे देखुछु ए पर्यंत पोर्तुगीज इन्फ्लुएंस अछि जेमति कि यूनिफॉर्म सिविल कोड so why we are seeing all these things because most of the colonial countries जो माने colonies थिले आगुरु बड़ पावर्स करा से माने तांकर जे colonial masters थिले तांकर legal system को adopt करछे so most of the Southeast Asian countries से माने भी okay adversarial system okay so take down India along with most of the Southeast Asian countries follows the adversarial system in which investigation is done by police and not courts. In which investigation is done by police and not courts. Investigation. से हमारा बहुत कन्विक्शन हुए नहीं अपन माने हम सब बाबू के कौन पे कन्विक्शन होने कहीं ना कोर्ट तो एविडेंस देखी कि ही तारो डिसीजन टा दबो ना तो सही स्टेज रे ही एमटी सब काम करा ही जाए जानी कि अजाणत रे जा भी हो कि से जहा भी ओके अपन प्रूफ दबो स्टेट सेटा इनकन्क्लूसिव बाहरिबो कि लैक ऑफ कंक्लूसिव प्रूफ लैक ऑफ कंक्लूसिंग एविडेंस ओके बहुत टाइम रे जदी इन्फ्लुएंशियल लोक थांती एडा बाय डिजाइन भी केबे केबे करा हुए ठीक अछि otherwise unless media pressure is there unless public pressure is there try agents बहुत जगह रे हुए take for example एक किछि दिन आगुरु okay maybe 6-7 months आगुरु there was this Porsche accident case in Bombay Mumbai रे सेठी गोटे बिल्डर को पुओ बोते से गोटे बहुत एक्सपेंसिव Porsche कार रे कि को कंपनी रे से जा भी एक्सपेंसिव कार रे से केते लोक को मार देला चढ़े देला हमको ओके ड्रिंक करी ड्राइव करते ठीक अछि एबे भी सेमती गोटे गुजरात रे कि कोटोडे सेमती गोटे आछि पुनी ओके बट एनीवे से जा भी हो ता अरेस्ट कराला ही वाज अरेस्टेड ओके आई थिंक द विक्टिम्स वर अ यंग कपल ओके नाइट शिफ्ट रे जाउथिले आईटी सेक्टर रे काम करथिले ये चढ़े देला तांको बाइक ऊपर सो व्हाटएवर सेते बळे केमिति मैनिपुलेशन हैला इनिशियल स्टेज रे एविडेंस रो तार एतळे ब्लड निया गला ओके टू टेस्ट वेदर अल्कोहल इज देयर इन द ब्लड पुनी जणा पडला कार ना आ गोटे लोकंगर कि तांको मां कर एमति का अलगा लोकंग ब्लड तान लेबलिंग रे दिया छि तो अलगा लोक जे ब्लड देछि तादर ऑब्वियसली बाहरी गनी ओके तो सेटा पे पब्लिक प्रेशर बढ़िला आ स्टेट ताको भलरे इंक्वायर कला ए सब जिंस बाहर ओके एडा गोटे सेंसेशनल केस हे गला बोली तेनु जदि न होई तांदा एमति बहुत गुडे केस रहउत राइट सो एडवर्सरियल सिस्टम रो गोटे प्रॉब्लम हैला एठी एई सब जिंस होबार समस्या सबुठी अछि बट एठी अधिका तेनु कन्विक्शन रेट टा रिलेटिवली कम ओके बहुत जण कहउचंती कि से पई आपण अमेरिका भलिया सिस्टम कर दियंतु जोटी कि जे डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी थिबो ओके तारी अंडर रे सब इन्वेस्टिगेशन हबो पुलिस विल बी देयर फॉर लॉ एंड ऑर्डर एंड हेल्पिंग पुलिस इन्वेस्टिगेशन करिबो बट सेते मैन पावर हमरो नाही हमरो ओके बिकॉज जेति की पुलिस ऑलमोस्ट सेति की बड़ फोर्स आपण गोटे तयारी करिया पड़िबो जे की इन्वेस्टिगेशन ओके करिवे और पुलिस को केवल लॉ एंड ऑर्डर काम दिया हो बट सेमिति रिसोर्सेस हम पाके नाही ओके सो इंडिया including India, most of these colonial countries or amaro region रे जदि देखिबा साउथ ईस्ट एशिया रे बहुत गुडे एई देश माने एई सिस्टम ही फॉलो कर एडवर्सरियल सिस्टम नेक्स्ट पॉइंट लिखंतु inquisitorial system here the investigation is done under the judicial supervision here investigation is done under judicial supervision example in France and Germany also it all over western European countries रे भी से माने okay तांगर ए सिस्टम टा अछि okay like in France and Germany तो एठी भी हमर लॉ कमिशंस एंड अदर कमिशन से माने कहि जंती ये हमर सिचुएशन देखि कि हमें इनक्विजिटोरियल सिस्टम
डायरेक्टली चेंज कर परियनि किंतु किछिटा भलो कैरेक्टरिस्टिक्स जोटा इनक्विजिटोरियल सिस्टम रे अछि ताको हमें हम सिस्टम रे यूज करि परियो सो मलिमत कमिटी किछिटा रिकमेंडेशंस देथिले नेक्स्ट पॉइंट लिखंतु मलिमत कमिटी इन 2003 suggested merger of good elements of suggested merger of good elements of inquisitorial system into the Indian system according to the committee point 1 court must search for the truth पुलिस कला से तो ठीक अछि अलग था कोर्ट को जदि लागु कि नहीं ये पूरा भूल भाल करछनी तले कोर्ट ओके ट्रुथ they have the powers they have been vested with the powers to search for the truth ओके एडवर्सरियल सिस्टम माने अनु कि जब पुलिस जा दे देला प्रूफ हिसाब रे इन्वेस्टिगेशन करी कि ताकू कोर्ट मानि दिले सो नंबर 1 कोर्ट मस्ट सर्च फॉर द ट्रुथ नंबर 2 जजेस शुड गाइड इन्वेस्टिगेशन ओके judges should guide investigation okay our third point quest for truth should be the duty of every court quest for truth quest quest means going in the path okay in a particular direction that is quest जेमती आपण कहले क्वेस्ट टू सक्सेस समस्त आपण सक्सेस पे चाहउछन कि जुडिशियल सर्विस एग्जाम रे कि लिटिगेशन फील्ड रे हला कि आपण को अलग को एग्जाम दे चाहउछन सो इन योर केस ओके इट विल बी क्वेस्ट फॉर सक्सेस इन ए पर्टिकुलर एग्जाम सेमती सब कोर्ट रो एटा बेसिक कांसेप्ट थिबा कि बेसिक इंटेंशन थिबा दरकार ओके क्वेस्ट फॉर ट्रुथ इज द ड्यूटी ऑफ एवरी कोर्ट ओके एटा हला आपण एडवर्सरियल और इनक्विजिटोरियल सिस्टम राइट तापरे नेक्स्ट वी विल कम टू हमर जो डेवलपमेंट हेची एविडेंस लॉ रो इंडिया ओके डेवलपमेंट ऑफ एविडेंस लॉ इन इंडिया नेक्स्ट हेडिंग टेक डाउन डेवलपमेंट ऑफ एविडेंस लॉ इन इंडिया development of evidence law in India. So take down. See, हमारे यदि हमें हिस्ट्री की देखिबा हमर हिस्टोरियन आमो हिस्टोरियंस नो जो बाहर हिस्टोरियंस माने यूरोपियन हिस्टोरियंस माने से माने कोन करछथि ना दे हैव डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री ऑन बेसिस ऑफ द रिलीजन ऑफ द रूलर्स तो प्रथम पार्ट रे हिंदू रूलर्स माने थिले तो ताकू आपण हिंदू पीरियड करछथि तापरे आफ्टर द अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध आपणकर जो माने इन्वेडर्स माने से माने देश को आसिले एंड से माने सेठी रूल करिवा स्टार्ट करले सेटा आपण मुस्लिम पीरियड तक कहउछन ओके और थर्ड टा से माने मॉडर्न पीरियड कहउछन ओके देखंतु केते से माने बुदिया हिंदू पीरियड कहले मुस्लिम पीरियड कहले तापरे कहले कोन ना मॉडर्न पीरियड ठीक अछि सो बेसिकली जदि हिंदू पीरियड अछि और मुस्लिम पीरियड अछि ताले तापरे तो जो माने आसी ऑक्युपाई कले एठी कि रूल कले ताको रिलीजन ऊपर आसीया कथा ओके सो क्रिश्चियन पीरियड आसीया कथा से हिसाब रे बट नो से माने ताको मॉडर्न पीरियड कहले ठीक अछि सो सेटा भी गोटे जिंस हम जाने तो सेटा बेले सेठी कोन कले कोन न कले दैट वी विल सी ओके सो टेक डाउन फर्स्ट हिंदू पीरियड तो एटा आपण पर्सनल लॉ जो मान नेबे हिंदू लॉ रे भी और डिटेल्स से पढिबे बट एठी कोन हमें जो साक्ष्य अधिनियम बोली कोया गला
आपण भाबुथिबे जो रूल्स ऑफ एविडेंस जा जा हमें सब पढिबा को जाईकी these have been basically British माने जा डिराइव करछन आमे माने एबे जा नु ऐड कर so we have done a great job right अपन देखिबे most of the things were there present okay in our ancient period Hindu law रे भी ताको देख परिबे Muslim law रे भी ताको देख परिबे before these Europeans came okay so first take down Hindu period okay so look on the first Hindu period first point based on the dharma shastras 4 types of evidence have been recognized 4 types of evidence have been recognized 4 types of evidence have been recognized okay so first है लेख्य लिखित ही और डॉक्यूमेंटरी ओके लेख्य और documentary evidence which was further divided into court evidence private evidence and personal evidence court evidence private evidence and personal evidence okay number 2 or second type of evidence according to the dharma shastras Hindu dharma shastras second type है sakshi okay sakshi or oral evidence okay oral evidence tapare number 3 third type of evidence under Hindu period that is the bhukti or the bhoga that means the possession right bhukti or the bhoga or the possession that is also a type of evidence ठीक है जोड़ा अपना possession रो concept है बे पढ़ते सेते बडू recognize थिला and number 4 जोटा human being रो evidence रे prove हे परिबन ताले भगवान को जंते हमें हमर बहुत गुडे epics रे सुनतु ठीक है कि मते गोटे proof किछि दबा पई केना अलगा किछि मो पकरे humanly it is not possible तो मु निया ऊपर चली कि पानी ऊपर चली कि और जदि मु सत कथा कहूची ताले you know God will help आ मु पानी ऊपर चली परी कि निया ऊपर चल परी मोर किछि होबन से ठीक अछि ताकू को आउतला ओके दिव्य divya or they were basically the difficult tests or the ordeals से टेस्ट पास कले ताले आपण जानुचंती कि ये आर एविडेंस ठीक अछि ओके सेतल ताउ डीएनए टेस्ट और ये सब जिंस नथिला okay so divya that is the fourth type of evidence that is divya or in a sense very difficult tests which one has to undertake if successfully se test pass korchandi ta mane bhagavan the divine has shown that it is correct okay ଆଉ এটা କେତେବେଳେ ହବ to be done in the absence of other types of evidence ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଲେଖ୍ୟ evidence ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ evidence ନାହିଁ ସାକ୍ଷୀ ଯେ ସେ ନାହାନ୍ତି or भुक्ति की भोग or possession सेटा नहीं then only you will go to the divya or the ordeals or the divine tests okay only if someone is speaking the truth जहाँ मान्यता अछि से माने सेटा करि परिबे ताले okay they only then they will pass the test यदि मिछ कहउचंती किछि गोटे यू नो गोटे किछि भूलभाल भाबिचंती ताले से पास करि ही परिबे से टेस्ट एबे कोन हमर सब कांसेप्ट पई डिफरेंट टेस्ट अछि जोरा में पढिबा एविडेंस क्लास टेस्ट वाले तो कंक्लूसिव प्रूफ पई एटा टेस्ट ओके तो कहा को फांसी दंड दिया कोन जोटा कि आपण आईपीसी रे किबा बीएनएस रे पढिबे
तापई सेमती टेस्ट अछि फॉर एवरीथिंग जेमती कि एबे मॉडर्न लॉ रे हमर टेस्ट रोची ऑफ समथिंग exactly in the same way. Okay, these kind of tests were there in the ancient period also. बुझिपारे एटा हला ancient period. Next लेखंतु तो एटा हिंदू period रे गला. Next आसीले आपण मुस्लिम period. Okay, एटा हम basically history देखुछु of evidence laws in India. Okay, so first point लेखंतु both oral and documentary evidence were used. Both oral and documentary evidence were used. Second point, Quran stresses justice and impartiality. Quran stresses justice and impartiality. Third, cross-examination and demeanor of witness recognized. Cross-examination and demeanor of witness. Demeanor called DEMEANR. केमिति से बिहेव कोच एटीट्यूड टा केमिति से तो बहुत गुण से जଣା पड़छ क्रॉस एग्जामिनेशन एंड डिमीनर ऑफ विटनेस रिकॉग्नाइज्ड सेटा हमें मॉडर्न लॉ रे बाहर करी की बेसी खुशी होता दनो कहीं ना ए जिंसोडा ऑलरेडी हमर फोर फादर्स माने ओके से माने डिफरेंट टाइम से एडा यूज करि सारछन वी हैव इंप्रूव्ड फ्रॉम देम ओके बट हमें एमति कहि परने हमें पूरा एडा नुवा हो राइट थर्ड पॉइंट fourth point, use of circumstantial evidence accepted. Use of circumstantial evidence accepted. Okay. Our last point, witnesses took oath based on religion. आज वो चाहे oath सेटा बहुत countries से तो witness जी ऐसे oath नौची तारा जो religion को मानूची तारा holy book ऊपर in many countries. Witnesses took oath based on religion. एटा गला आपनकर मुस्लिम पीरियड. Okay, then next the modern period आपण कहउछन ठीक अछि. So this is one major question of history पढला बहुत पिला पछन जदि ancient India रे rulers were Hindus. Okay, हर्षवर्धन को पर्यंत तो तांको हिंदू इंडिया आपण कहले हिंदू पीरियड आपण कहले. Then came the Muslim rulers after the Arab conquest of Sindh. तांको भाई आपण okay, you have used the word the medieval period or the Muslim period. सेही हिसाब रे जेतले यूरोपियंस माने आसले पोर्टुगीज माने आसले डेन्स माने आसले माने ब्रिटिश आसले फ्रेंच आसले तो सेते बडा पर मॉडर्न पीरियड नहीं करते ना सेटा क्रिश्चियन पीरियड करते हैं मोस्ट ऑफ देम आर इन फैक्ट पोर्टुगल जेतले आसिला पोर्टुगल गोवा हरिका जेतले आसिकी ओके वास्को डा गामा पहुंचले आसिकी ओके वेस्टर्न फ्लैंक रे साउथ वेस्टर्न फ्लैंक रे आउ तापरे से सेठिकार जे राजा थिले ओके जैमोरिन से तांको जाईकी तांसा एग्रीमेंट्स करिया चेष्टा करे आस्ते आस्ते से गोटे जगह छडू जितिया स्टार्ट कर राइट माने द पोर्टुगीज कुछ बेले तो अपन से हिसाब रे ताको रिलीजन ना रे तो प्रथम दिटा देथिले एटा बट सेटा देखिया भाई एटा गोटे सेक्युलर ये दैट वाज नॉट द केस ओके तार हिस्ट्री अछि देन यू कैन रीड इट जो माने 5 इयर्स लॉ पिला अपन हिस्ट्री पेपर थिबो ओके सो तार हिस्ट्री आ मु हिस्ट्री भितर बेसी जीवेनी वर्ल्ड रे सेते बेले दीटा बड़ बड़ पावर्स थिला कॉलोनियल पावर्स साम्राज्यवादी जो माने ओके गोटे थिला पोर्टुगल आ गोटे थिला स्पेन तो तार गोटे युद्ध होइतिला ओके आ से युद्ध भितर से चाबी तांगर गोटे ट्रीटी हैला से ट्रीटी हिसाब रे माने कोन कहले दुनिया टा को हाफ कर देले गोटे इमेजिनरी लाइन ड्रा कर देले भाई से लाइन रो लेफ्ट को जो एरिया गुड़ा अच्छी जोड़ा कि कन्वर्ट है ना क्रिश्चियनिटी को सेठी पोर्टुगल जाई तो कन्वर्ट करिवो आ जो माने एपटे लेफ्ट साइड रे जो माने रही गले तो सेटा स्पेन ताको जाई कन्वर्ट करिवो कन्कर करिवो रिसोर्सेस यूज करिवो तेनु पोर्टुगल
लोक माने एठी आसी ओके देयर लॉट ऑफ अदर थिंग्स आल्सो बट मोटा मोटी भाबरे बुझि पारे तो रिलीजन वाज वेरी इंपोर्टेंट आपण जदी गोवा जिबे तो सेठी आपण देखिबे सेंट जेवियर जहाँ नारे एते यूनिवर्सिटी एते स्कूल्स वरिका पढ़ाई हमर तो सेंट जेवियर को एक्चुअल रोल टा कौन थिला तांकर रेलिक माने रिमेन्स करिका सेठी गोवा रे अछि गोटे ओके तो तांकर रोल कौन थिला so you can study about inquisition of goa एमिति नो कि इनक्विजिशन टा केवल गोवा रे हितला सब बहुत जगह रे हितला से माने टू स्पेन आउ पोर्तुगल से माने तांकर नॉन क्रिश्चियन एरियाज को क्रिश्चियन करिया पे से माने बसते ओके इनक्विजिशन so you study what all happened in inquisition although amara eguda not a part of what we are studying but relate kariya pai janiba darkar तो एनीवे ताको से मॉडर्न पीरियड कहले जाबी अच्छा से मॉडर्न पीरियड रे आस्ते आस्ते जते बळे ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया हे गला राइट बैटल ऑफ बक्सर राइट बैटल ऑफ प्लेसे ओके और पहले से अपन जेमती भी ताको प्रोनाउंस करो सो गोटे पॉइंट आसिला कि दे वर रूलिंग ओवर यू नो आस्ते आस्ते से माने एंटायर इंडिया पर रूल करिया आरंभ कर तो सेही टाइम रे ताको गोटे दरकार पड़ला कि जहाँ सब जो मैंने सब जहाँ भूलभाल कर कोर्ट रे तांको गोटे यूनिफॉर्म लॉ रे प्रोसिक्यूट करा सो मॉडर्न पीरियड टेक डाउन मॉडर्न पीरियड ओके तो को वर्ष रे कौन केमती स्टार्ट हेतिला मॉडर्न पीरियड रे सो टेक डाउन इंग्लिश लॉ was introduced around 1726 English law was introduced around 1726 in presidency towns ହେଲା तीनटा प्रेसिडेंसी थिला सेते बेले एते बड़ बड़ सिटीज हे नथिले ओके कोटा गोटे थिला बॉम्बे ओके तो बॉम्बे बेसिकली ताको जोतुक रे मिलथिला का ब्रिटिश को राइट इन तांकर किंग जे से बाहले गोटे पोर्टुगीज क्वीन को आई डोंट रिमेंबर पोर्टुगीज की किए तो से गोटे गोटे लीज टाइप रो ताको दियाला बॉम्बे ओके कहीं ना ब्रिटिश आसीबा आगुरु बॉम्बे वाज एस्टैब्लिश्ड तापर ताको कलकत्ता सेटा गोटे हला तो सेठी कोन थिला ना छोट छोट गां केतेटा थिले तो ताको मुगल्स माने प्रथमे ओके अलाउ कले तुम से गां रे जेंकी तुम बिजनेस एक्टिविटी कर करो एमती कालिकाता थिला जोठु कलकत्ता ना पड़ला ओके एंड अदर 2-3 विलेजेस वर देयर तो सेटा से माने बने कलकत्ता दे हैव एक्चुअली मेड इट ओके तो कलकत्ता तले चले सेठी गोटे फोर्ट बने देले दुर्ग फोर्ट विलियम ओके तापरे कले गोटी मद्रास ठीक अछि सो सेठी भी फोर्ट बनेले राइट सो दैट इज हाउ ए तीनटा प्रेसिडेंसी टाउन्स तांको करिले एई तीनटा जगह तांकर सेंट्रल पावर टा से एक्सरसाइज करथिले बेंगल टा प्रथमे बहुत इंपोर्टेंट थिला तापरे से माने तीनटा जगह प्रेसिडेंसी टाउन ऊपर कंसंट्रेट कले तापरे आस्ते आस्ते कैपिटल शिफ्ट करी गला कलकत्ता बहुत वर्ष पर्यंत रहिला तापरे शिफ्ट कला दिल्ली की कुछ कर ब्रिटिश अंडर सो पॉइंट नंबर 1 इंग्लिश लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1726 इन प्रेसिडेंसी टाउन्स तो एगुडा प्रेसिडेंसी टाउन्स आपनकर को जाय एठी आपण देखिबे आगु को हमें टाइप्स ऑफ कोर्ट्स पढिबा तो गोटे जगह रे हमें पढिबा प्रेसिडेंसी कोर्ट्स तो द कोर्ट्स इन बॉम्बे मद्रास एंड कलकत्ता ताकू प्रेसिडेंसी कोर्ट्स बोली कहजो ओके नेक्स्ट पॉइंट there was no unified evidence law in Mofussil areas MOFUSSIL okay in Mofussil areas the presidency towns करika पई तो किछि से माने तार व्यवस्था कले but other areas which were ruled under dual administration system in many cases जो जगह रे क्रिमिनल पार्ट टा दिया जाउतिला नवाब को
ओके जो राजा को आउ रेवेन्यू और सिविल पार्टा ब्रिटिश रखुଥିଲେ कहीं अपन तो कहबे तो क्रिमिनल तो रखिया कथा कहीं ना तांको मेन इंटेंशन कौन थिला लॉ एंड ऑर्डर भलो रहू सोसाइटी टा भलो रहू सेटा किसी इंटेंशन नथिला इंटेंशन कौन थिला खजना केते मैक्सिमम खजना आसीबो तापई रेवेन्यू लॉ सिविल लॉ पाके रखे पड़ियो किंतु तापर से मैंने देखिले एटी लॉ एंड ऑर्डर रो प्रॉब्लम होची ए नवाब माने से माने जा इच्छा ओके से माने ताकर क्रिमिनल लॉ ठीक रे से माने जस्टिस दे पारुनांती आ तापई सोशल प्रॉब्लम्स बहुत होची कोठी रॉयट हे गला के का को मार देला से सब जिंस पई आको रेवेन्यू कलेक्शन कम ही जो ओके तो यदि पीस रहिबो ताहले आको रेवेन्यू कलेक्शन पड़ियो तेणु आस्ते आस्ते सब गुड़ा राइट्स निज पाखु नहीं गले क्रिमिनल कोर्ट से भी से गुड़ा यूज करियो स्टार्ट कर कुछ बोलो सो नेक्स्ट multiple acts were passed and multiple acts related to evidence multiple acts were passed between 1835 to 1869 each of those acts mone rakhiba kichi darkar okay multiple acts were passed between 1835 to 1869 finally all these acts were brought together all these acts were brought together under a single statute that is i.e. the Indian Evidence Act drafted by Stephen the Indian Evidence Act drafted by Stephen in 1871 and enacted in 1872 and enacted in 1872 अच्छा तो एटा हला तारा ओटे ब्रीफ हिस्ट्री आपण देखिले तापर बीएसए हला तो नेक्स्ट पॉइंट लेखन इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया माने हमरो 1947 पर several amendments were brought to the Indian Evidence Act several amendments were brought to the Indian Evidence Act finally a more comprehensive and updated evidence law finally a more comprehensive to underline karantu and updated evidence law was introduced in 2023 named the Bharatiya Sakshya Adhiniyam okay तापर फीचर्स ऑफ बीएसए एंड ऑल से सब जिंस हमें सेकंड की थर्ड क्लास रे देखियो ओके माने आउ दीटा क्लास करे देखियो ता फीचर्स उडा भी जानियार अछि अच्छा ए जो एविडेंस लॉ तेथरे आपण केमिति हाउ द कोड कम्स टू ए कंक्लूजन आउ एविडेंस लॉ गुडा को हमें केमिति ताको आउरी एनरिच करूछु पढौछु ओके इंक्लूड करूछु अमेंड करूछु केमिति कौन किछि तो प्रिंसिपल्स हमें यूज करछबा ओके सो जनरली हमें इंडक्शन और डिडक्शन रो प्रिंसिपल यूज करू तो नेक्स्ट हेडिंग देंतु साइंटिफिक प्रिंसिपल्स इंडक्शन एंड डिडक्शन
scientific principles, induction and deduction. Okay, लेखन तो ताले induction and deduction रे एगुड़ा आपण जो माने +2 रे मैथ्स पढ़िथिबे सो एई जिंसोडा आपण इंडक्शन डिडक्शन ऑलरेडी करथु ठीक अछि सो पॉइंट 1 लिखंतु कोर्स यूज inductive and deductive reasoning courts use inductive and deductive reasoning to come to conclusions courts use inductive and deductive reasoning to come to conclusions. Okay, next point, induction on. So take down induction or inductive reasoning, drawing general conclusions from specific facts. Drawing general conclusion from specific facts. Okay, drawing general conclusions from specific facts. ठीक है so let's say गोटे केस अच्छी तो जे पुओ कि झियो से पेरेंट के फादर की मदर को इल ट्रीट करचंती बाडौचंती जाबी करचंती फॉर मनी ओके ताका पैसा पाई कुछ बदे तो ताकू से गोटे पर्टिकुलर स्पेसिफिक केस रु कोर्ट गोटे जनरल कंक्लूजन को आसी परंती ओके general conclusion from specific facts okay that एमिति हे पारे कि पिला माने या करिवे पेरेंट्स को संगे that is induction okay next है deduction or deductive reasoning applying general rules to specific facts applying general rules to specific facts ओके तो ये इंडक्शन और डिडक्शन को यूज कला परे आउ भी केते दिन सो कोड यूज करंती टू कम टू द कंक्लूजन सो कंटिन्यू judicial inquiry also relies on moral certainty and prudence judicial inquiry also relies on moral certainty and prudence 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 माने कोन जो जिंसडा ठीक से जिंसडा करिबा ओके दैट इज prudence right so this is a brief overview of the first chapter तापर आपन को नोट्स रे देखिबे गोटे जिंस दिया हिची दैट इज कॉल्ड माइंड मैप ठीक अछि मोरे नोट करली सेतरे 50 पेज लिखिली रिवीजन बेले 50 पेज यू नो कान थरे पढी देछि और निजे नोट बनेछि माने कांसेप्ट हम बुझी गली किंतु ताको गोटे मने पके पड़िबो 50 पेज मु पढी परिबे कि काई कि पर्सनल नोट ता बनेबा इंपोर्टेंट काई ना परीक्षा टाइम रे कि जोटी इंटरव्यू टाइम रे कि जाबी मु संगे संगे कांसेप्ट रिफ्रेश कर पारि सो माइंड मैप्स आर वेरी इंपोर्टेंट आपनकर जो पीडीएफ टा आपनकर ऐप रे अपलोड हिची सेठी थ्योरी परे माइंड मैप्स उडा अछि ओके मु गोटे माइंड मैप आपनकर खाली एक्सप्लेन कर दोची आपन सेतरे देखिबे सेला फॉर एग्जांपल जंती आपन टाइप्स ऑफ एविडेंस अंडर द एक्ट इट सिंपल हे गला ओरल एविडेंस रहिला डॉक्यूमेंटरी एविडेंस रहिला ओरल एविडेंस केते टाइप रो डॉक्यूमेंटरी एविडेंस केते टाइप रो ठीक अछि से सब जिंसोडा आपन देखिछन तेनो एंटायर चैप्टर टा जा हम चैप्टर्स पढिबा तो एट द एंड सेमती माइंड मैप 5-6टा थिबो डिपेंडिंग चैप्टर केते बड आपन थरे चैप्टर टा पढि देला परे तापरे जेते बळे आपन रिवाइज करिवे केवल से गोटे पेज की 2 पेज जा माइंड मैप अछि ताको ही देखिबार अछि सफिशिएंट से बुझि पाले सो दैट इज हाउ you have to
use the resources. Got it? So take 5 minutes or any doubts you have jaha aji ame kon kolu basically class re overall gote idea pailu evidence mane kon. Okay, how evidence act or the law of evidence सेटा कौन इंडिया रे कौन बेसिकली को कौन सिस्टम आमे रखिछु एविडेंस रो. ओके, मोर और लेस गोटे ओवरव्यू आपण पाइले. वी हैव नॉट गॉन टू द डिटेल्स येट जोडा कि काली आमे भी टिके देखिबा. ओके, दैट ए जो जिंसोडा मु कहली सब्सटेंटिव लॉ. ओके, प्रोसीजरल लॉ, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस बेसिक जिंसोडा में बुझी गलु कि जे राइट्स आपण को ओके दौची कि नहीं जाउची व्हिच कन्फर्स और टेक्स अवे राइट्स ताले ताको आपण कहले से सब्सटेंटिव लॉ हला. आ जो थरे को मोड रे केमिति कामटा हो प्रोसीजर टा एक्सप्लेन करा हला ताको आपण प्रोसीजरल लॉ कहले. बट एटा हला फंडामेंटल डेफिनेशन. बट एमिति बहुत गुडे कैरेक्टरिस्टिक्स अछि प्रोसीजरल लॉ रो. ओके, आउ सब्सटेंटिव लॉ रो से गुडा हमें देखिबा. What are the characteristics of procedural and substantive law? Okay, किछि examples नबा गोटे scenarios नबा एटी procedural कौन procedural aspect involved कौन substantive aspect involved. Getting it? So concept टा भलरे बुझन. आउ टेक्स्ट बुक टा पढन सेटा बहुत important. Read the textbook. Anything, any word, any concept you are unable to understand, ask me. You don't have to wait for the class to ask me. मु पढुतली सर 7th पेज रे ए आया मोर डाउट बारला मते व्हाट्सएप नोट करी पठी पारे. आई विल आल्सो रिप्लाई टू दैट. ठीक है, डोंट हैव टू वेट फॉर द क्लास एट 6 PM कि आपन को डाउट क्लियर करबे रह. गेटिंग इट? इफ यू हैव एनी डाउट्स देन लेट मी नो, एल्स वी विल स्टॉप एंड वी विल कंटिन्यू टुमारो. काली आपन को ऑफलाइन क्लासेस ओके वेडनेसडे तो छुट्टी अछि. But online classes will be there. 7 o'clock class ta bhi rahibo, a class ta bhi rahibo. Okay, fine. Any doubts? Anything you want to ask? Any doubts, etc. Then ask me. Else we'll stop here. No doubts? Okay, fine. Then we will stop here. And tomorrow we'll meet again at 6. Okay. नोट टा टिके पढ़ी देबे. ऑलरेडी अपलोडेड अछि आपनकर ऐप रे तो सेठी पढ़ी देबे. ओके, थैंक यू, नमस्कार.